household protected. Tells us something different about Rahab. I don't know if you've ever known a prostitute, but a prostitute, her family is usually not very close to her. They're ashamed of her. But she was looking out for her father and her father's house. And in fact, the Israelites protected them. And Rahab is going to, in fact, be, she's going to be in the, well, I'll show you. This is who Rahab is, what she gets out of this. I'm going to the New Testament, and I'm going to the genealogy of Jesus, chapter 1. So, the genealogy of Jesus, and I want to show you how important Rahab is. Look at this. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, and Judah was the father of Perez and Zerah by Tamar, and Perez was the father of Hezron, Hezron the father of Ram, and Ram the father of Minadab, and Minadab the father of Nachshon, and Nachshon the father of Salmon, and Salmon was the father of Boaz by Rahab. So Rahab, our prostitute, God redeemed her. She ends up being the mother of Boaz, who is going to marry Ruth. So Rahab ends up being in the genealogy of the Messiah. This is what God can do. I don't care how bad your life has been. I do not care what the sin is that you've committed. God can redeem your life. Go ahead, अब Maria. यहाँ पे जो है हमें अंदाजा नहीं है कि राहब पाशा से क्या मुराद है। वो औरत जो बुरे काम करती, बदफेली में थी, उसके बहुत सारे ताल्लुकात होंगे खराब होने से, उसका किरदार अच्छा नहीं होता। और नॉर्मली ऐसा होता है, ऐसी औरतों के हवाले से ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मली ऐसी जो औरतें हो जाती हैं, उनसे उनके माँ बाप ताल्लुकात नहीं रखते, किसी किस्म का रिश्ता कायम नहीं रखना चाहते, उनसे किनारा करते हैं, उनसे ताल्लुकात नहीं रखते, उनसे दूरी इख्तियार करते हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज को देखें कि यसु मसीह ऐसी औरतों को किस अंदाज से, किस नजर से देखते हैं, तो इसका अंदाजा हमें इसका रेफरेंस नए अहदनामे में मत्ती की अंजील, उसका पहला बाब उसकी 2 आयत से मिलता है। यहाँ पे हम जो है पढ़ेंगे कि किस तरह से एक नस्लें जो पैदा हुई, एक के बाद एक नस्ल, उसकी नस्ल को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए, यहूदा से फारस और जारा तबर से पैदा हुए, और फारस से हसनून पैदा हुआ, और हसनून से राम पैदा हुआ, राम से अमीदाब पैदा हुआ, अमीदाब से नहसून पैदा हुआ, और नहसून से सलमून पैदा हुआ, सलमून से बोइज। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि बोइज, जब बॉयज का जिक्र आता है तो बॉयज जो है उस राहब से पैदा हुआ जो फाशा से, जो कि जिसका किरदार ठीक नहीं था, जो बुरी कामों में थी, जो कि बदफेली में मुब्तला थी। अब हम देखते हैं कि जब हम यसु मसीह की नस्ल का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे राहब का जिक्र कैसा है, हम देखते हैं और यहाँ से अंदाजा लगाते हैं कि यसु मसीह की नजर में अगर कोई बहुत भी गुनाहगार औरत है तो खुदावन यसु मसीह की नजर में उसका गुनाह कोई माने नहीं था, क्योंकि खुदावन ने उसे अपने खून से मोल लिया है, वो इसका इर्जी हुआ है, उसने उसके लिए, उस गुनाहगार के लिए भी जान दी है। और देखें किस तरह से उस फाशा औरत के गुनाह को माफ करके यसु ने कबूल कर लिया है
और उसकी नस्ल से बोइस पैदा हो, और बोइस से आप देखते हैं कि आगे दाऊद, यस्सी से दाऊद, दाऊद से यीशु मसीह पैदा हो। ये इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे कोई फाहिशा हो, बदफेली में उतरा हो, यीशु मसीह हमारा इब्सी बनता है, हमें माफ करता है। तो अगर ये लोग भी उस फाहिशा के घर में जाते हैं, तो ये वही औरत है जिसे खुदावन ने इब्जी बना के जो है अपनी अपनी फर्जंद फर्जंद बनने का हक बख्शे। So God does these miracles and restores a life. Now let's go back to the story. In chapter 3, the spies have come back and given a good report. Verse 24, at the end of chapter 2, the spies tell Joshua, truly, Yahweh has given all the land into our hands, and also all the inhabitants of the land melt away because of us. So, good report, we can take the land. And in chapter 3, Joshua gets up early in the morning as they're setting out to begin their trip. They come to the Jordan, he and all the people of Israel, where they had spent the night. And the end of 3 days, the officers went through the camp and commanded the people, when you see the ark of the Lord your God being carried by the Levitical priests, then you set out from your place and you follow it. So they're not going to go anywhere without the ark of the covenant going in front of them. You'll keep a proper distance away from it. And then Joshua says, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. I want you to see what he says there. Verse 5, chapter 3. Consecrate yourselves, make yourselves holy, for tomorrow Yahweh will do miracles among you. Hear what Joshua is saying. All of you are leaders in the church. That's why you're taking this course. God's called you. You have got to speak for God in your situation as God uses you. And you've got to have this confidence. Notice what Joshua says. Tomorrow, God is going to do miracles among you. He knows God so well. He says, we're going to take this land, and God is going to do miracles. In your life, you've seen God do miracles in your life. So you've got to have the confidence that God is going to work so that what he called you to do, you can do. He's not going to waste your time. If he's called you to something, he's going to enable you to do it, just like Joshua. But like Joshua, you have to have the courage to tell people about it. God is going to do miracles among you. Okay, Maria. यहाँ भी फिर हम देखते हैं कि किस तरह से यशवा, जब वो दो जासूस जो है उन्होंने जाके अच्छी खबर दी, उन्होंने जाके बताया, खुशखबरी दी कि भाई वहाँ की खातून तो ऐसे कह रही है कि वहाँ के लोग और बादशाह तो पहले ही आपको उनके खौफ से भूले जा रहे हैं। वो परेशान है, उनको लगता है कि आप उनकी लैंड, उनकी जमीन, उनका मुल्क ले लेंगे, उसका कब्जा कर लेंगे। अब यही खबर उन जासूसों ने जाके जोशुआ को दी। जोशुआ जो है खुश हो गया। फिर हम देखते हैं कि जोशुआ क्या कहता है अपने लोगों से। यशवा कहता है, और यशवा ने लोगों से कहा कि तुम अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदावन तुम्हारे दरमियान अजीबो गरीब काम करेगा। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जिस तरह से आप और मैं जैसे इस कोर्स के लिए चुने गए हैं, हम सीखते हैं, कलाम मुकद्दस सीखते हैं। हो सकते हैं आप में बहुत सारे लीडर्स भी हों, अपने चर्च को चला रहे हों या कलाम सुनाते हों। फिर जिस तरह से यशवा ने
जिस तरह से हौसला किया, उनका हौसला बढ़ाया और उनको कहा कि कल के दिन तुम अजीबो गरीब काम देखोगे, क्योंकि खुदावंद अजीब काम करेगा। ऐसे ही हमें भी हौसला करना है और अपने लोगों को, और जितने लोगों को हम बता सकते हैं उन लोगों को बताएं कि कल का दिन खुदावंद अजीबो गरीब काम करेगा और बताएगा। हमें इस बात पर ईमान रखना है, हमें हौसला रखना है और हिम्मत से काम लेनी है, जैसे यशवा ने कहा कि हम कल का दिन अजीब काम देखेंगे। हाँ, इस तरह से हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे मौजज़ात होते हैं, हमारी जिंदगी मौजज़ात से भरी है। हमें लोगों को बताना है और ये इस बात पर ईमान रखना है, जैसे यशवा ने रखा कि खुदावंद कल का दिन अजीब काम करेगा, और यकीनन खुदावंद करता है। So I want you to see something. So the Israelites are here. I want you to notice how Joshua is painted as a second Moses. Moses. What did Moses do with the Israelites? He crossed the Red Sea with them. Well, what's Joshua going to do? He's going to cross the Jordan with them, just like Moses crossed the Red Sea. Moses sent 12 spies. Joshua sent 2 spies. So what Moses did, Joshua's doing. He's painted as the second Moses. And I want you to hear what he says. Yahweh talks to Joshua. He says, today I will begin to exalt you, and they will know that I am with you, just I was with Moses. That's on purpose. In the same way that I was with Moses, I'm going to be with you. Go ahead, Maria. देखते हैं कि यशवा किसकी अक्कासी कर रहा है और किसका रोल प्ले कर रहा है। सेम लाइक मूसा, बिल्कुल मूसा की तरह। जिस तरह से हम देखते हैं कि मूसा ने इस्राएलियों के साथ कैसे रहा, उसने क्या किया इस्राएल के साथ, उसने हम देखते हैं कि उसने रेड सी को पार किया, किस तरह से बहरे कुलजम 2 हिस्से हो गया और वो इसराइली कौम को पार लेके चला गया। फिर जैसे उसने 12 जासूस थे, तो सेम ऐसे ही यशवा भी जो है यर्दन के पार से लेके जा रहा है। वो दरियाए बहरे कुलजम के पास से लेके गया, लेकिन यशवा जो है यरू के पार से उनको लेके जा रहा है। इसी तरह से मूसा ने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को अपने साथ चलाया, अपने साथ लेके गया। उसमें 12 जासूस भेजे, लेकिन यशवा ने जो है 2 जासूस भेजे। तो यहाँ पे वही पेंटिंग जो मूसा की है, हम यशवा के ऊपर उसकी अक्कासी कर सकते हैं। तो वो भी वही रोल प्ले कर रहा है, जैसे मूसा ने इसराइलियों को पार लेके गया, वैसे ही यशवा भी इसराइलियों को पार लेके जा रहा है यर्दन के पार, यरू के पार। So God tells Joshua, when you come to the shore of the Jordan River, you shall stand still in the Jordan. I want you to go in the Jordan and just stand there and watch what happens. And Joshua calls the people. He says, this is how you're going to know that the living God is among you, and that he will, in fact, drive out all these peoples from before you. Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth is passing over before you into the Jordan. When they step into the Jordan carrying the ark, the Jordan will split, and they will create a way for you to cross the Jordan. The waters of the Jordan shall be cut off from flowing, and the waters coming down from above will stand in one heap. So the miracle of the stopping of the Jordan is a proof that God is with them. How else are they going to cross the river?
They've got a whole army. How are they going to cross the river? They've got to have a miracle. So when I keep pushing this, I don't want you to think I'm crazy, but you serve a living God. I want you to realize that He's a living God. He's a God who breathes and talks and acts, and He will act for you to do what He called you to do. Only you know what you're called to do. I don't know, but you know. And God will act so that you can do it if you're faithful to Him, if you'll believe Him. He'll do it not for your glory, but for His glory. Go ahead, Maria. देखते हैं कि जिस तरह से मूसा जो है बनी इसराइल को बहरे कुलजम के पार लेके गया। आपने देखा है कि बहरे कुलजम का पानी जो है चाक हो गया, जो दीवार की सूरत में बन गया। तो इस तरह से मूसा जो है बहरे कुलजम के पार लेके गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि यशवा भी जो है यरदन के पार अपनी कौम को लेके जाता है। तो उसके कहने पे भी लोग मानते हैं, कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं। अगर हम 11वीं आयत में देखते हैं तो वो कहते हैं, ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारी बारिश किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन जो है पानियों को भी थमा देता है। इसका मतलब है कि पानी भी उसका हुक्म मानते हैं और खुदावन जो है अपने लोगों की बात सुनता है। उसके लोग जब अपने लोगों इसराइलियों को लेके जा रहे थे तो खुदावन उनकी बात सुन रहा था। इसका मतलब हम किसी मुर्दा खुदा को नहीं मानते, हम जिंदा खुदा को मानते हैं, जो हमारी दुआओं का और हमारी सारी मुनाजातों का जवाब देता है। So remember, all the people who saw Yahweh God split the Red Sea so they could walk through it, those people are all dead. They died in the wilderness and the wanderings. This is a new generation, second generation. Their miracle is the splitting of the Jordan so they can cross. And get this picture. You've got 12 guys, one from each tribe. They're all carrying the Ark of the Covenant. They're standing in the middle of the river. The river is dried up. The army passes over. And while they're out in the middle of the river, they pick up 12 rocks, one for each tribe. They take the rocks across the Jordan and they set them up and they make an altar. And this is a memorial to remind them of what God had done. And when your children in time to come ask, what do these stones mean to you? You shall tell them that the waters of the Jordan were cut off from before the ark of the covenant of Yahweh. And when it passed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. So these stones shall be to the people of Israel a memorial forever. God does His miracles to tell His story. And when God does miracles in your life, it is your responsibility to tell others of what God has done. That's why He does it. Maria? ये देखते हैं कि मूसा ने जो है बहरी कुलसम को चाक किया, इसराइलियों को लेके गया। तो जो नस्ल जो है बहरे कुलजम को पार कर दी थी, आप देख सकते हैं। तो सारी जो है नस्ल जिनने सारा रास्ता जो है घबराहट की, बहुत सारी शिकायतें की, वो सारी नस्ल जो है मर गई, तलाक हो गई। और वहां भी इसराइल की फौज भी थी, आर्मी भी थी। इस तरह से वो भी हलाक हुई। लेकिन अब जो यरदन के पार लोग जा रहे हैं वो एक नई नस्ल है, बिल्कुल नई नस्ल है। उनमें वो लोग नहीं थे जो मूसा के दौर में थे, जिन्होंने शिकायत की थी, वो लोग शामिल नहीं हो रहे। ये बिल्कुल नई नस्ल थी जिनको मूसा यरदन के पार से लेके गए। और हम देखते हैं कि जब यशवा जो है, इसराइलियों को यरदन के पार से लेके जा रहा था, तो वो लोग जो है, मूसा के दौर में थे, जो मूसा की शिकायत की थी, वो लोग शामिल नहीं हो रहे। ये बिल्कुल नई नस्ल थी जिनको मूसा यरदन के पार से लेके गया। और हम देखते हैं कि जब यशवा जो है इसराइलियों को यरदन के पार से लेके जा रहा था,
तो उन्होंने जो है तकरीबन 12 पत्थर उठाए, क्योंकि वो 12 कबीलों के हिसाब से थे जो कि याकूब के थे। और जब उन्होंने क्रॉस कर लिया, उसको पार कर लिया अहद के संदूक के साथ, तो उन्होंने उन्हीं 12 पत्थरों से जो है एक जो है नजराना बनाया, एक खुदावन के लिए, जिसपे जो है कुर्बानी करते थे। वहां पे वो उसको चढ़ाने के लिए उन्हीं पत्थरों से यादगारी बनाई कि हम लोग, ये वो यादगारी है जो हमने पत्थरों से बनाई, ये वो यादगारी है जिसको जो है हम पार निकलते वक्त ये खुदावन की सामने पेश की है, ताकि जब लोग पूछें कि ये क्या है, इसपे तुमने कोई नजराना तो नहीं चढ़ाया, कोई कुर्बानी तो नहीं की, तो ये पत्थर किस चीज की निशानदेही कर रहे हैं? तो ये पत्थर उस चीज की निशानदेही कर रहे थे कि खुदावन ने उन्हें बहरे कुलजम से और यर्दन की पार से बाहर निकाला है। तो आज हम भी जो गवाही दे रहे हैं, जिस तरह से उन पत्थरों की वजह से उस कौम ने गवाही दी, आज हम पे भी ये जिम्मेदारी है कि हम भी बताएं कि खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगी में क्या काम कर रहे हैं, लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाएं। Okay, so the Israelites were on this side of the Jordan. They had a river between them and the people they're trying to conquer. They cross the Jordan. They have this miracle. God divides the water so they can walk through. And then look what he does. Joshua in chapter 5. At that time, Yahweh said to Joshua, circumcise everyone. What? He waits until they're across the Jordan, to circumcise them. Because when you circumcise all the men, they're not going to be able to fight for a while. They're going to be in pain. But they're all over here now, and God says, circumcise them. For the people who had come out of Egypt, this is that second generation. They had not been circumcised. That tells us something that we got to keep in mind. So Moses led the Israelites out of Egypt. They get the law of Moses. They're all circumcised. That's what he does at Mount Sinai. They're all circumcised and made part of the covenant. But then that generation dies in the desert, remember? God makes them wander. But the second generation, their kids, they did not circumcise. Moses forgot to make them circumcise their children. And Joshua is having to do it now. We're in the middle of an invasion. And this is the reason why Joshua circumcised them. All the males of the people who came out of Egypt, all the men of war, had died in the wilderness on the way after they'd come out of Egypt. Though all the people who came out had been circumcised, yet all the people who were born on the way had not been circumcised. For the people of Israel walked 40 years in the wilderness until all the nation, the men of war who came out of Egypt, perished because they did not obey the voice of the Lord. The Lord swore to them he would not let them see the land. So it was their children who he raised up in their place that Joshua circumcised, for they were uncircumcised because they had not been circumcised on the way. The Israelites had failed to follow the Lord. They had not circumcised their children. So now Joshua is having to do that. Go ahead, Maria. तो हम देखते हैं कि मूसा कोहे सीना पर क्या करता है कि उसने लोगों को हुक्म दिया कि तुम खतना करो। और यहाँ हम देखते हैं कि यशवा जब लेके निकलता है, 3 आयत में देखते हैं यशवा ने क्या किया। यशवा ने चकमा की चूड़ियां बनाई और खड़ियों की पहाड़ी पर बनी इसराइल का खतना किया। और यशवा ने जो खतना किया, इसका सबब ये है कि जो लोग मिस्र से निकले, उनमें जितने जंगी मर्द थे, वो सब बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ते ही नहीं आते। बस वो सब लोग जो निकले थे, उनका खतना हो चुका था।
पर वो सब लोग जो बिन्याबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ते ही में पैदा हुए थे, उनका खतना नहीं हुआ था। उससे पहले जो मूसा के दौर के जितने लोग थे, बच्चे बुजुर्ग जवान जितने भी थे, बच्चे उनके साथ थे, उन्होंने, आपको पता है, 40 साल किस तरह से खुदावन की नाफरमानी की। लेकिन खुदावन ने जो है वो सारे जवान मर्दों का खतना करवाया। और ये लोग जो नई नस्ल है, उन्होंने खुदावन के हुक्म को नहीं माना और अपनी नई नस्ल का खतना नहीं किया। तो चूंकि ये हुक्म खुदावन से मिला था, तो यीशुआ ने चाहा कि ये जो नई नस्ल जिसको मैं यरदन के पार ले जा रहा हूँ, ये तो बिल्कुल नई है, उनको खुदावन के कलाम का नहीं पता। तो इसलिए इस सारी नई नस्ल का जो है यीशुआ ने हुक्म दिया कि इनका भी खतना होना चाहिए, और यूं सबका खतना किया गया। So in Joshua 5, verse 8, we read, when the circumcising of the whole nation was finished, they remained in their places in the camp until they were healed. So they had to heal from the circumcision. And what I want you to see is, if he had done that on this side, he would have the Jordan as a natural barrier to protect them. But he didn't do that. He waited until they were over here, so that the only protection they have is Yahweh. Joshua is going to depend on the Lord. We will circumcise him here. And the Lord protects them. They're actually staying. I'll show you. Right, you can. This is Gilgal. It's a little spot near Jericho. So they took those 12 stones out of the middle of the river, piled them up here, and they called the space Gilgal, which is a Hebrew word meaning to roll away, because they've rolled away the shame of not being circumcised, because Joshua got them circumcised. And he tells them that. Today I've rolled away the reproach of Egypt from you. And so the place is called Gilgal. So what I want you to see is Joshua is utterly dependent on Yahweh. When you do your calling on your life, you have to be utterly dependent on Jesus. You have to trust him to provide for you, to do for you. Go ahead, Maria. हम देखते हैं कि यीशुआ ने किस तरह से उन सबके खतने किए, हालांकि उनको पार जाना था। यरदन के पार जाने के लिए उनके पीछे जो है बहुत सारे खतरात थे, बादशाह थे, मुल्क थे जो उनके दुश्मन थे, उनको आगे जाना था। लेकिन चूंकि यीशुआ ने सबके खतने करवा दिए जितने वहां पर नौजवान थे, तो वो तकलीफ में मुब्तला थे, और उस तकलीफ की वजह से वो आगे सफर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यशवा डरा नहीं, बल्कि उसको खुदा पर भरोसा था, एतबार था। वो खुदा पर, यहोवा पर भरोसा रखता था कि अगर हम इसको क्रॉस नहीं भी कर पाए तो कोई दुश्मन हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा खुदा हमारे साथ है और वो ही हमें बचाएगा। जिस तरह से सर ने बताया कि अभी मैप में आपको एक जगह बताई है यरदन के पार जाने से पहले, जिसका मतलब है कि रोल ओवर, यानी कि उसने लपेट दिया, सब खत्म कर दिया। तो इसी तरह से यीशुआ का ईमान देखें तो वो ईमान रखता है, वो खुदा पर भरोसा करता है, तवक्कल रखता है। आज हमारी जिंदगी में जब हमारी बुलाहट होती है, जब खुदा अपने काम के लिए हमें बुलाता है, तो हमें ये देखना है कि आगे जो है खुदावंद हमारे साथ है, और वो जो है हमें यरदन को पार करने की कुदरत रखता है। हमें ये नहीं देखना कि हमारे दुश्मन खा कितने भी हों, खा हम कैसी भी तकलीफ में हो, कैसी भी परेशानी में हो, खुदावंद खुदा, हमारा खुदा हमें बचाएगा और इस मुश्किल से निकालेगा। हम खुदा पे डिपेंड करें जैसे यीशुआ डिपेंड करता है। So they're now in
the promised land. They've crossed the Jordan. They're in the promised land. And the next thing that happens is they keep the Passover. While they're in the promised land, they're recovering from being circumcised. They keep the Passover. It's their first Passover in the promised land. And in the process of keeping the Passover, they ate the produce of the land. Consequently, the Lord stopped the manna. They've been living on manna all this time, remember? They'd wake up in the morning and there'd be manna on the ground. But now that they're in the promised land, it stopped. Verse 12, chapter 5. And the manna ceased the day after they ate of the produce of the land, and there was no longer manna for the people of Israel, for they ate the fruit of the land of Canaan that year. Maria? देखते हैं कि जैसे ही यशवा ने जिलाल को जिलजाल को पार किया, तो हम देखते हैं कि वहां पे उनका जो फूड था, जो आसमानी मन था, जो खुदावन इसराइलियों को बरसाता रहा था, वो मन मौकूफ हो गया। और फिर यहाँ पे ये पहली फसह की थी जो यहाँ पे यशवा और उसके लोगों ने देखी थी और मनाना था। Okay. Now we have a very interesting story. This little paragraph in Joshua chapter 5. Remember, I told you that Joshua is being painted as the second Moses. And I want you to see that. He made the river split up. He's leading the people. He circumcised them. The manna has stopped. And look what he says. And when Joshua was by Jericho, let's look at the map. So he's over here. They're camping in this area. They're near Jericho. When he was over by Jericho, Joshua lifted up his eyes and looked, and look, there was a man standing before him with a drawn sword in his hand. And Joshua went to him and said, "Are you for us or for our enemies?" He said, "No, I'm the commander of the army of Yahweh. That's why I've come. I'm neither for you or for them. I'm the commander of the army of Yahweh." And look at Joshua's reaction. And Joshua fell on his face, bowed down, and said to him, "What does my Lord say to his servant?" And the commander of the army said, "Take off your sandals from your feet. The place where you're standing is holy." And Joshua did so. That's the end of the story. We don't know anything else that happens. That's the end of the story. Go ahead, Maria. फिर हम देखते हैं इस तरह से जो है यशवा के साथ खुदावन था, और सेम वही अक्कासी जिस तरह से खुदावन के साथ मूसा रहा, जो जो कुछ मूसा ने किया वही यशवा ने किया। जैसे दरियाए बहरे कुलजम को इसने पार किया, तो इसने दरियाए यशवा ने दरियाए आपको पता है दरियाए यरदन को पार किया। उसने जासूस भेजे, इन्होंने भेजे, मूसा ने भी खतना किया, इसने भी नई नस्ल का खतना किया। तो हम देखते हैं जिस तरह से मूसा जो है वो काम करता रहा, इस तरह से सेम यशवा वही काम करता है। तो यहाँ यशवा जो है मूसा की सारी वही अक्कासी कर रहा है। फिर हम देखते हैं सबसे बड़ी बात क्या होती है कि 13वीं आयत में लिखा है, और जब यशवा यरू के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है। और यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, "तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ?" उसने कहा, "नहीं, मैं इस वक्त खुदावन के लश्कर का सरदार होकर आया हूँ।" तब यशवा ने जमीन पर सरनगू होकर सजदा किया और इससे कहा कि मेरे मालिक अपने खादिम से क्या इरशाद है। और खुदावन के लश्कर के सरदार ने यशवा से कहा, "तू अपने पाँव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुकद्दस है।" तो यशवा ने ऐसा ही किया। So remember what I said.
Joshua is being described like Moses. Well, you remember back in chapter 3 of Exodus. In fact, why don't we look at it? When Moses is keeping the flock of his father and he sees the burning bush and he turns aside and says, "Huh, a burning bush." And God called out to him, "Moses." And Moses said, "Yes." And God says, "Do not come near. Take your sandals off your feet. So the place in which you are standing is holy ground." When Moses was at the burning bush, God made him take off his sandals because it was holy ground. Well, now we're same thing. जैसा They've कि हम circumcised. ये चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं कि यशवा जो है बिल्कुल मूसा की तरह है और उसकी अक्कासी कर रहा है जो कुछ मूसा ने किया। तो अगर हम खरोच उसका 3 बार उसकी दूसरी आदमी पढ़ते हैं, यहाँ पर भी सेम वैसा ही वाकया हुआ है जैसा कि यशवा के साथ हुआ। जिस तरह से फरिश्ता ने उसे कहा कि अपनी जूती उतार क्योंकि ये जगह पाक है, मुकद्दस है, बिल्कुल उसी तरह से जो है मूसा के साथ भी हुआ। और खुदावन का एक फरिश्ता झाड़ी में से एक आग की शोला में से उस पर जाहिर हुआ और उसने निगाह की और क्या देखता है, एक झाड़ी झाड़ी में आग लगी हुई है पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा कि अब मैं जरा उधर कतरा कर उस बड़े बंदर को देखूं, क्योंकि क्योंकि ये झाड़ी जल क्यों नहीं जाती। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है तो खुदावन ने उसे झाड़ी से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि इधर मेरे पास आ, अपने पाँव से जूता उतार क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस है। बिल्कुल इसी तरह से जो है खुदावन के फरिश्ता ने भी यशवा को सेम यही बात कही कि जहां तू खड़ा है वो जगह पाक है। So Joshua, well, in fact, that's what it says, and Joshua did so. He took off the sandals and obeyed. What you're going to see with Joshua is he obeys. And that is the secret to walking with God. He just obeys. And he's going to try to get the people to obey. तो यहाँ पे हम हमारे सीखने की सबसे बड़ी बात यह है कि मूसा ने भी खुदावंद की बात को माना। और सबसे बड़ी बात ये है कि यशवा ने भी वो ही किया। जब फरिश्ता ने उसे कहा कि अपने पाँव से जूता उतार देते, यशवा ने भी फौरन उसकी बात मानी। तो हमारी समझने की बात ये है कि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, जब वो हमें कोई हुक्म देता है तो हमें उसके हुक्म को मानना है, उसकी फरमाबरदारी करनी है। खुदावंद के हुक्म से तजावुज नहीं करना, उसकी बात को मानना है। ये सबसे बड़ी बात है। So now the story turns to the taking of Jericho. This is what Jericho looks like today. See all the palm trees? And back there, it's the Dead Sea. It's in the middle of a desert. You have all these palm trees because of the spring. Jericho is located on a spring. This is what the rest of the ground looks like. It's like this. But Jericho has these trees in green. In the middle of what's brown, here's this green of the trees. Maria? हम इस तरह से गर्दन के पार से इनको जाना था। तो गर्दन का जो ये उसके अतराफ का इलाका है, इसके पीछे जो है डेड सी है, बहरा मुर्दार है, और ये सामने की जगह बहुत सारे खजूर के दरख्त हमें नजर आते हैं। इस तरह से जो कि तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, इस तरह से यर्दन का इलाका है।
आगे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, भले पीछे बहुत ज़रात है, रेतीली जमीन है। तो इस जगह से इस सारी कौम को होके इसमें से गुजरना था। More of the spring. This, the ancient city, some of the old ruins. This would have been the Jericho that Joshua would have attacked. A ये वो jug. कदीम नदियां हैं सारी, आपको नजर आएंगी कि इन सारी जगहों पे, इन कदीम जगहों से होकर यशवा को गुजरना था। इन सारी जगहों से यशवा ने अटैक। Human skulls from Jericho. Ancient walls from Jericho. More walls from Jericho. And more walls. You can see how decorated it could be. But look how dry and desolate the area around Jericho is. Compare that to the palm trees that we just saw. आपको इसकी दीवारें इतनी कदीम है, ये बहुत ज्यादा पुरानी है, लेकिन एक बात ये है कि ये बहुत ज्यादा खुश्क नजर आ रही होंगी, ये बहुत ही खुश्क है। More. This is looking back into the wilderness from Jericho. All right. So और वो जो पीछे आपको नजर आ रहा था, आपने देखा बियाबान के पीछे का सारा मंजर है, जहाँ से जो है इसराइली निकले। all right, somebody asked a question on the chat. Why do we not take off our sandals when we're in church? That's going to be dependent on the culture of where the church is. You don't do that in the US. It'd be an insult to take off your shoes to enter into the church. But in some other churches, it'd be an insult to wear your shoes. So you just have to be sensitive to what the culture is in your church. There's no standing order that we have to remove our shoes. It's just that Joshua did it and Moses did it. But notice each time, it's not something they just wanted to do. They were told to do it. So if God tells you to take off your shoes, take off your shoes. But if he doesn't, then you don't have to. भाई ने सवाल किया था कि अगर खुदावन जूते उतारने का हमको कह रहा है, तो आजकल के दौर में हमारी चर्चेज में हम जूते क्यों नहीं उतारते। तो सर ने इसका ये जवाब दिया है कि ये आपके कल्चर में, यानी कि हमारे इंडियन कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर में होता है कि हम अपने जूते उतारते हैं, लेकिन सर ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम जूते पहन के जा सकते हैं। और यहाँ पे खुदावन की बात मानने से मुराद है उसके हुक्म को मानना। अगर वो जूते उतारने का बोलता है तो हम जूते उतार सकते हैं। यहाँ पे मेन चीज है खुदावन के हुक्म को मानना। अगर वो खुदा का हुक्म जूते के हवाले से कि उतारना है तो उतार सकते हैं। अगर वो कोई और हुक्म देता है, मेन चीज ये है कि हम खुदावन के हुक्म को माने, उसकी बात को तस्लीम करें। इससे मुराद ये है। Okay. Now, for the actual taking of the city of Jericho, which is in chapter 6, we know the story. They march around it once a day for 6 days. And on the seventh day, they march around it 7 times. And on the 7th time, when they march around it, they blow the trumpets and the walls fall down and they take it and they capture the city. And then it specifies only Rahab, the prostitute, and all who are with her in the house shall live. They're specified to protect her because they're going to keep their word. So they captured Jericho. Now, they're supposed to devote everything they capture, it's supposed to be destroyed and turned over to the Lord as a offering. But they don't.
it turns out they don't do that. They don't obey. But the they in this case is not Joshua. It's just one man, Achan. He doesn't do it. So, हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशुआ ने जब वो फाइनली यरू को पता करने जा रहे थे तो उसने क्या किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने लोगों को ललकारा और कहानों के नरसिंगे फूंके। और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी। और लोगों ने हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने इसको ले लिया। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यीशुआ ने किस तरह से यरू पर फतह पाई कि कैसे उसको ले लिया, कब्जा में कर लिया। पर उन्होंने उस औरत को, राहब बादशाह को, क्योंकि उन्होंने उससे वादा किया था कि हम उसको और उसके खानदान को कुछ नहीं कहेंगे, लिहाजा सिर्फ उस मुल्क में से उन्होंने राहब बादशाह उसके सारे घराने को जो है बचा लिया। all right, so they captured Jericho. The next thing they're going to do is take Bethel and Ai. They're just going to go straight up. Now, this is on top of a mountain range. I don't know if you can see that. That's at sea level, and they're climbing up these mountains to get to this. And when they attack Ai, they get defeated. And they're going, wait a minute. God's supposed to go in front of us. We're not supposed to be defeated. And that's when they find out that Achan had taken some of the stuff from Jericho and they had violated the word of the Lord. They had not kept the word of the Lord. And Joshua judged Achan for it, and then they do take Bethel and Ai. Maria? यहाँ पर हम देखते हैं कि यरू से जब वो जा रहे थे वो पता करके, तो आई से गुजर के इनको बैतेल में जाना था। तो ऐसा हुआ क्योंकि वो चढ़ाई थी, ऊंचाई का रास्ता था, वहां पे चढ़ के इनको जाना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है इन्होंने शिकस्त खाई, और शिकस्त खाने की एक वजह थी मालूम है। So this is we're going to stop here, but this is the central part. So they take this, and so now they've split the country in two. They've established this stronghold, and now they can go south and capture that part, and then go north and capture that part. And that's what we'll talk about next time. But we'll stop here. I'm going to stop देखते हैं sharing. कि उन्होंने जो है मजबूत इलाकों पर, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर थे, ज्यादातर हिस्से को कब्जा कर लिया है, कब्जा पा लिया है। और आगे उनको और भी जगहों पे जाना है, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे। Okay. So I will see you next week. Continue to pray for my health. Please pray for Kenneth's health. And God bless you and speed you on your way. Thank you, sir. Lots of Okay. love and honor for you, sir. We appreciate Thank you. that. Thank you. Thank you, Dr. Mats. And Thank we you. are keeping you. God give you good health. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, everyone. God bless you.